with the introduction. Ma'am. Good morning, ma'am. My name is Dipendra Kumar Yadav, and I come from the city Bhilai. Right now, I am pursuing BTech in Electrical Engineering domain from National Institute of Technology, Jaipur. In my academic years, I have done multiple projects, and the major project which I carry was a short-term load forecasting project, which was a machine learning project. And this keeps me in touch with the new upcoming technologies like machine learning. Apart from that, I also participated in various internship programs, and the major ones are which I have done was with CSPTCL, Bhilai Steel Plant, and Load Dispatch Center. I equally balance my mental and physical health by participating in various co-curricular activities like playing football in my college and doing my college committee work. Uh, Thank you for giving this opportunity to introduce myself, ma'am. And I am really excited to discuss how my profile can make me a valuable asset to your team. Okay. So, Dipitra, why are you not planning for any government sector? Right now, no, ma'am. In my college years, I have only prepared for this core opportunities, on-campus course opportunities, and I don't have any plan to prepare for this government sectors So why not examinations. government? Like people are, many of the students of your sector only, they're preparing for PSUs and all that at a very Uh, early stage. like, ma'am, I haven't like I haven't explored that part. I think from in the start, starting the career from the that types of Dipindra, industries आपकी like voice flat JSL हो रही and है. this will uh, okay, ma'am, please. It's clear right now. Yeah, it's Hello. fine. In between, there is a lagging. Okay, I think, ma'am, should I connect my earphones? Not let me, I think, shift to another device also. Let me also check it out if it is problem from my side. Just Just a a second. second. हाँ दीपेंद्र इस पे कनेक्ट करके देखते हैं अगर मेरे से प्रॉब्लम नहीं है तो Okay, ma'am. yeah. Okay. So, So, why are you not planning for government sectors as many of the students of your sector are planning for PSUs? ma'am, like I haven't explored that part yet, but I think starting my career from the industries like JSL will increase my learning capacity, and I will get more opportunities to implement my theoretical knowledge, and I'll have a good industrial exposures from this private sector. That's why I haven't I'm going from only core opportunities, not going for PSUs or any government examinations. How long are you planning to work with us? Yes, ma'am. How long are you planning to work with us? Like I'm like I have I'm planning for this. Like I'm planning this for last my from second year, third year. Like from the time I have started preparing for this core opportunities. From that, JSL is one of my targeted company. No. Question is depends आप कितना time हमारे साथ काम करना चाहते हैं? How long are you planning to work with us? कितना time work करना चाहते हो? I'm not asking about the preparation you're doing it out. Okay, ma'am. Like how long is like I think, ma'am. Like I'll prepare. Uh, I'll it's not like that like how long, but I'll work for till the point it is till the point I want to work with the JSL for the very long time, because I want to get into the leadership positions, and I want to influence the positive changes in the organization as well. So I think I'll if if any mishappening or unfortunate incident was not going, I'll going to work for forever in this in the organization till my retirement Okay. age. So, okay. Dipendra, what about your strengths and weaknesses? Ma'am, my strengths includes my theoretical and technical aptitude and my theoretical knowledge. Apart from that, my soft interpersonal soft skills like my leadership quality, my trustworthiness, and my adaptability. These things I consider my strengths. And go on the flip side, in weaknesses, like sometimes I take too much work at the same time.
So that creates sometimes some messy situations. So I'm working on it by like prioritizing the task. So I considered this was one of my weakness. I figured on myself. हॉबीज क्या है आपकी? My hobbies include like I'm playing football, and I used to read a Finshot articles. It was a 3 minute article. So these were few of my hobbies. Okay. So depends to tell me that if you are selected today, right? Like what Yes, will ma'am. be your work profile? क्या काम करना होगा आपको? Yes, ma'am. I really know about my work profile. Like if I am selected as electrical engineer for any industries, like I have to mainly as an industry in the industries like JSL, my main work was a maintenance task where I have to maintain all of the electrical machines that was going to, I have to repair them and in the electrical repair shops. And I have to indulge myself in the assembly parts of the new equipments that will arrive in the industry. And I have to learn about the new technologies about in the industry that is going to implement and work in that team as an electrical engineer. Okay. So Dipinder, you tell me that one thing that GSL के competitors कौन-कौन से हैं? And JSL's के competitors, if JSL's competitors like we have a sale is one of the PSU. So since I come from the city Bhilai, there was a plant called Bhilai Steel Plant, which is very famous for the stainless steel, very famous for as a steel plant. It is one of the competitor, and we are small rolling mills are the competitors of JSL. Which category of stainless steel do we use at home? घर में कौन से यूज करते हैं? Uh, कैटेगरी कौन सी है? uh, Category, ma'am, like I don't know about that, but I'll research about it. Know that part. ओके. करंट प्रोजेक्ट्स कुछ पता है आपको जिंदल स्टील्स के? कहाँ पे चल रहा है? Jindal Steel, ma'am, basically Jindal Steel is well known for its sustainability and conservation, energy conservation, energy efficiency projects. So right now, they are going to implement the automation systems in their plants, which is in Hisar, Haryana. So there was a like they are mainly focusing on the green energy and the energy part and energy conservation part. And Okay. Where do you see yourself Dipinder in the next 5 years? I see myself in any leadership position in the JSL where I can influence the positive changes in my team, and I want to like guide new joinees as a mentor in the leadership position. So I see myself in that in last five in going 5 years. You are currently focusing on the leadership positions. अभी तक आपने कौन सा leadership role perform किए थे? Right now, like I am the in the leadership position, like I am in head coordinator of sports committee of my college, and I am also the leader in my team projects, that short-term load forecasting project I have mentioned. So these were the leadership positions I have done, I am indulging with. ओके फाइन राइट. सी Yes. दीपेंद्र, जब नया क्वेश्चन आ रहा है ना उसमें थोड़ा ट्रैप हो रहे हो. जैसे कितना टाइम काम करना चाहते हो जिंदल स्टील्स के साथ, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं दैट आपने स्टार्टिंग में क्या बोला? टू स्टार्ट माय करियर विद जिंदल स्टील्स, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर. इट वाज नॉट लाइक यू आर गोइंग टू एंड दैट करियर आल्सो ऑफ योर लाइफ इन द जिंदल स्टील्स डिपार्टमेंट ओनली, राइट? एंड दे Yes, नॉर्मली ma'am. डू इट आउट कि आप कितना टाइम प्लान कर रहे हो और किस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो, क्यों आपको हायर किया जाए, क्या आप में स्किल्स हैं. ये बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने पूछा है. आई थिंक इससे बेसिक्स दे आर द वेरी स्टार्टिंग क्वेश्चंस, राइट? Yes, ma'am. फोकस कहाँ पे होना चाहिए आपका दीपेंद्र? जैसे अगर आपने इंट्रोडक्शन दिया दैट वाज फाइन, इट वाज अ गुड इंट्रोडक्शन, लेकिन जब आप एंड पे थैंक यू बोल रहे हो वो स्टार्टिंग में होता है या मिडिल में? वो एंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट, वो थोड़ा आपके फ्लो में गड़बड़ हो गई थी शायद, इस वजह से Yes. इट वाज नॉट लुकिंग गुड. ठीक है, एंडिंग लाइन Yes, उसकी. ma'am. उसके Yes, बाद आ ma'am. जाता है इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर देन यू शुड बी रेडी टू कंपेयर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट फॉर देम, right? That Okay, is, ma'am. I'm not inclined towards the government sector because of the fast moving culture in private sector. और मुझे private sector ज्यादा पसंद है. या आपका ये होना चाहिए डिवोशन टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर. बिकॉज आप देख सकते हो Okay. मैम, आपका इसमें जैसे मैं कंपेयर करवाती हूँ पीयूएसयू वर्सेस प्राइवेट को भी,
ठीक है, कि स्टील में तो सेल बागी यस आ मैम। जाता है और भी कोर में आ जाता है, तब उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो, अब इसको क्यों टारगेट कर रहे हो? तो बहुत रीजंस होते हैं आपके। मैं अभी पीएसयू लाइक इसको टारगेट कर रहा हूँ, द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आई एम मोर फोकस्ड एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, नॉट द पीएसयू सेक्टर. There are multiple reasons behind it. Now, I think that the private sector carries a very fast-moving culture, and you have to learn a lot in the private sector. क्योंकि PSUs में थोड़ा work culture है, वो थोड़ा slow and steady होता है, because there are number of policies they need to implement it out and pass down. तो उसमें processes में time लगता है. Plus कोई भी यस artificial कोई भी technology आती है, new advanced technology is there, वो कहाँ पे जल्दी आएगी पहले? वो private में ज्यादा जल्दी से incorporate की जाती है ना, than in the public sector, right? So ma'am, that is the यस reason मैम। वहाँ पे incorporation बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है. And that is a pretty reason that I want to go for the PSU's private sector. ठीक है, तो pace, fast moving यस मैम। change, the kind of technologies that you inherit, everything is more inclined towards the private sector and less in the PSU sector. ठीक है, यस हाँ, उस तरह से यस आप मैम। अपनी चीजों को फोकस कर सकते हो. और जिंदल स्टील्स हैव अर्न्ड इट्स नेम एंड इट्स अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. आई कैन लर्न अ लॉट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. वो आपका नेक्स्ट स्टेप्स आ जाता है इंपॉर्टेंट वाले. यस मैम। ठीक है, इसमें यस थोड़ा, मैम। हाँ, इसको एक तो इसको प्रिपेयर करो, इस आंसर को, इसका नहीं था. हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू वर्क विद अस मैम? आई थिंक दैट आई एम एमिंग फॉर अ प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर, और आई वुड से इट आउट मैम, आई एम एमिंग फॉर good growth enrichment in terms of projects, and I think that once I enter Jindal Steels, at least I would be working for a very long time, because I'm a person who is very dedicated and committed to work. आपको कुछ साल बताने की जरूरत नहीं है, ओके। जैसे बच्चे बता दें मैं 5 साल तो करूंगा ही, 10 साल तो करूंगा ही मिनिमम काम. ठीक है, तो आप इस तरह से बता दो मैम, आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग टर्म करियर, बिकॉज आई एम अ पर्सन इज वेरी डेडिकेटेड towards any organization, and first are always special for me. So I'm planning a long-term career in Jindal Steels, as long as I'm able to meet the needs of Jindal and Steels, and the vice versa goes on. Practical answer है. ठीक है, एंड और अगर वो पूछते कि क्या नीड्स आ जाती है आपकी, कैसे प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर एम करते हो, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ, वेयर आई थिंक दैट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई विल बी लर्निंग अ लॉट थ्रू मैसिव प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर मी. ठीक है, एक तो वो हो हाँ। गया. उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आ जाती हैं. ओके, तो स्ट्रेंथ में भी वही आ यस जाता है, वही आ गया. आपने बोला थियोरेटिकल और टेक्निकल, आपने बहुत ज्यादा ना ब्रॉड दे दिया. सॉफ्ट स्किल्स भी एकदम से दे दिया, आपने कैटेगराइज कर दिया. सॉफ्ट स्किल्स में एक आधा कैटेगराइज करो, लाइक इट कैन बी अ कम्युनिकेशन, इट कैन बी अ गुड लर्निंग कैपेबिलिटी, right? ओके। So I have यस strong hold on theoretical and technical skills. Apart from it, the soft skills which I'm very good in it are my communication, my the way I maintain, you can say, the leadership capabilities I control, and the one more it can be, right? That can be your strength. Weakness आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा काम ले लेता हूँ. मैम, लाइक It is हाँ, like you're मतलब poor कि in एक साथ। multitasking, then, right? यस मैम। You're bad in बट multitasking, मैम ये, right? यस मैम, बट लेकिन ये स्ट्रेस मतलब कभी कभी मैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो What kind of messy situation मतलब? मतलब मैम, जैसे कि अगर मेरे को आज ही जैसे मैं कोई कॉलेज कमेटी का काम कर रहा हूँ, आज मेरे को करना उसको करना ही है, लेकिन मेरे 2-3 दिन बाद एग्जाम्स हैं, तो मेरे को दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। वो स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कभी कभी। तो वो एक टाइप का ये थोड़ा वीकनेस हो नेगेटिव गया। भी हो सकता है, बिकॉज प्राइवेट में आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, और कोई बिल्कुल एकदम से आता है तो आपको कवर करने पड़ते हैं. क्या मैम, तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब you can say this in a better way. It can be, ma'am, I'm very open to work, and sometimes it creates a trouble for me only because there are a lot of things to manage, right? उसको इस तरह से बोलो तो that would be better for you. क्या? ठीक है, बाकी वीकनेसेस और भी होती है, जैसे आई लैक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ये बहुत जेनरिक सी वीकनेस है. मैनी, आई थिंक बॉयज में तो ये कॉमन वीकनेस आप बता ही सकते हो एज अ टेक्नोक्रेट. तो दैट कैन बी योर वन वीकनेस. नॉट ओके मैम। सेइंग नो टू समवन, दैट कैन बी योर वीकनेस. तो इस तरह से मल्टीपल वीकनेसेस पे आ जाओ. ठीक है, ओके। ये वाला पार्ट भी हो गया. स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज ठीक था आपका. बाकी ठीक था पार्ट. जहां पे मैंने आपको बोला जिंदल स्टील्स का, एक आधा वो पढ़ के भी आ जाओ क्वेश्चंस को. ठीक है, ओके दीपेंद्र, और बाकियों के साथ भी लगा लो एचआर. ठीक है, ओके मैम। ओके। ओके ओके.